Welcome to Inspire Campfire, a podcast where ordinary people tell their stories of extraordinary adventure. These are campfire stories meant to inspire the rest of us to light the fire within, get outside, follow our dreams, and return to tell our own stories. Ready? Let's strike the match. Welcome to the show. I'm your host, Scott Wurzbacher, and today we have a very unique and special episode for you as we cross the globe to hear Himalayan mountaineering stories directly from a local who grew up in the mountains of India. Our guest is Amit Negi from Himachal Pradesh, India. Amit was raised in a small village in the high mountains and early on became a high-performing professional athlete competing at high altitude. He soon became interested in mountain climbing through both direct experience and formal education. And over the past 4 years, Amit has climbed some of the highest and most dangerous mountain peaks in the world, including 3 over 8,000 meters or 26,000 feet. They are Mount Everest, Kanchenjunga, and Mount Annapurna. When it comes to mountaineering, Amit is the real deal, and we are about to learn what fuels his desire and call to the mountains. Now, joining us as co-host for this episode, we have my very good friend and past guest, Krishna Kumar, with whom I recently traveled to the Kingdom of Bhutan. We both live in Charlotte, North Carolina, but Krishna spent most of his childhood and young adult life in the city of Bangalore, South India. Krishna is an avid hiker, and we share a fascination with the Himalayan mountains. And I am delighted to have him with us to help facilitate today's conversation, as Inspire Campfire has become not just a global podcast, but also a global community. Amit, Krishna, welcome to the campfire. Yeah, thank you, sir. Thank you guys so much for being here. I'm so excited. So as I talk about this being a global podcast and a global community, that is true. So the reason that we are all here today, we were connected by some past guests. So Miriam Lancewood and Sophie Hilaire. Miriam was episode 88 and Sophie Hilaire was episode 95. They're two amazing adventurers, and they spent 2 months trekking through the Himalayas this past fall. And Amit, they met you, and Miriam was incredibly inspired by your story and the adventures that you've taken. And so I just wonder if you could tell us a little bit about that chance encounter and the meeting that you had with Miriam and Sophie. Miriam ma'am visit in my village. First of all, I visiting to India, and a small passes she already conquered. And she also visiting my shop, and I'm totally shocked to the end. First of all, I introduce who are you and what kind of you will come to the Himalaya, and she explained me, and then she just talk about myself. Okay, what work you will done. Then I explained to my stories, and she inspire, and oh, you are done to the lot of work, hard work, and achieving too much high mountains. So seriously, and another girls already reach in my home. I think a USA captain in Marina and USA captain. So she also traveling to the middle Himalaya passes and a lot of experience. Very strong woman. Seriously. Yeah, so Sophie Hilaire and Miriam Lancewood, incredible people. Yeah, Sophie. Yeah, that's right. So Amit, can you tell us, I want for our listeners to get an understanding of what it was like for you growing up in India. And I wonder if maybe you could describe what your village was like. Sir, India is, like a beautiful country. And I born in the Himalayan region. Himalaya is like a range, and 6,000 meters, 7,000 meter in India, middle Himalaya. And I'm so lucky to born to middle Himalaya. And a lot of
mountain, like difficulties mountain in this place, and like tribal area in like situated like very nearby Tibet border, and my my place is like 6 month is a winter, and the 6 month is like a beautiful weather and beautiful condition. People very hard work, and and the mountain is always encouraged me and motivated me to the come to the climb and like explore. तो आपका बचपना कैसा रहा? How was uh, your childhood? my childhood मैं बचपन से ही sports as a sports person था, like as an athlete, and my journey started as an athlete, and then I started to the volleyball. I play in my uh, volleyball game, और उसके बाद धीरे धीरे मैंने चेस माउंट ट्रेनिंग में स्टार्टअप किया, लाइक कॉलेज कॉलेज समय में। लेकिन जो मेरा जो गांव का जो एक माहौल था वो एक माउंटेन से जुड़ा हुआ था, क्योंकि मैं हमेशा माउंटेन्स को देखता था, घर से बाहर निकलता था, तो उससे बहुत मुझे मोटिवेट मिलता था। और मेरे गांव में काफी लोग सुबह उठते ही मॉर्निंग वेकअप एंड अर्ली वेकअप टू द हार्ड वर्किंग माय मॉम डैड एंड लॉट ऑफ पीपल। तो वहां से मुझे काफी मेरा जो बचपन था वो इस माउंटेन से गुजरा था। Acha, acha. So what he's saying is, growing up, even with the schools and things like that, he played a lot of sports. But every time he stepped out of his school, he would see the mountain ranges, and Mhm. that motivated him a lot. And he would see his parents work in the fields quite a bit, and they were hardworking. But to him, mountains were the calling, and that's what got him encouraged and encouraged him to get into this sport. I love this because that was going to be my next question is how did you get into mountaineering? So I wonder if we could go a little bit deeper and talk a little bit about sort of those first experiences with mountaineering. अ, तो आपको तो आपको पहले पहले आप माउंटेनियरिंग किए ना, तो कैसे किया आपका? क्योंकि आप पहाड़ देखते थे, लेकिन कैसे मोटिवेट हुआ? क्या क्या किया आपने? क्या कुछ ट्रेनिंग किया, ऐसे ही गए कहीं? ड्यूरिंग मैंने जो एनसीसी की थी, लाइक कॉलेज कॉलेज समय में एनसीसी जो मेरा पार्ट था, लाइक तो वहीं से मुझे एक मोटिवेशन मिला। एंड एनसीसी में मुझे एज अ प्री एवरेस्ट एक्सपीडिशन जाने का फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सिलेक्ट हुआ था, लाइक तो उस समय मैंने सोचा कि मैं एज अ बॉर्न इन हिमालय रीजन, तो मैं माउंट ट्रेनिंग शायद स्पोर्ट्स के साथ माउंट ट्रेनिंग क्यों नहीं कर सकता। लेकिन जब मैं माउंट ट्रेनिंग फील्ड में आया तो मुझे लगा कि मैं जितना भी हाई एल्टीट्यूड में रहता हूँ, लाइक बॉर्न हाई एल्टीट्यूड बॉर्न में रहता हूँ, तो विदाउट प्रैक्टिस आप हाई माउंटेन को कॉन्कर नहीं कर सकते विदाउट ट्रेनिंग। तो मुझे अपने फैमिली से भी काफी मोटिवेट मिला। फर्स्ट ऑफ ऑल माय फादर इज लाइक अ शेपर्ड, एंड ही इज ऑलवेज मोटिवेटेड मी टू द क्लाइम टू द माउंटेन। तो उन्होंने अपनी लाइफ में काफी शेपर्ड के साथ लाइव माउंटेन पे गुजारा था, तो थोड़ा सा एक्सपीरियंस मुझे वहाँ से डैड से मिला और मेरे मदर से भी। तो एज अ घर पे हार्ड वर्क एज अ फार्मिंग करते थे, सो आई एम सो इंस्पायरिंग टू द माय फैमिली। That's great. That's great. So his early motivation was from the National Cadet Corps, where he enrolled, and they had opportunities where they had pre-Everest training. And having been born in the mountains, and his father being a shepherd and having done, climbed up mountains himself, both his dad and mom were motivation for him, and he just pursued his passion. And it was through these small opportunities that he was able to, shore up the skills and slowly get into mountaineering and
doing scaling the peaks that he is talking about. Mm. I wonder. Yeah. Yeah, and उसी बीच में like I'm really sorry, and like उसी बीच में मुझे lot of courses मुझे पता चला and मैंने किया. I'm a first Indian to the completed my all courses to the all Indian mountaineering uh, uh, government institute, say like basic M, AMC Advanced Mountaineering Course, MOI Master of Instruction, Search and Rescue, Alpine Winter Training, and as a last liaison officer, I complete all over courses to the improve my mountaineering and my skills. That is great. That is great. So basically just completing all the courses and making sure that he is skilled enough to climb all these, large mountain ranges. That was key for him. Yeah, you've got an I got a chance to look at your what we'll call it the resume before we had this conversation, and it's impressive the number of training classes that you've taken. I'm curious if you remember some of your earliest experiences climbing and like some of the feelings that helped you to like just want to come back. Those feelings of just the wow that you experience when you're on the mountain, and those sort of feelings that called you to want to come back. तो आपको समझा वो क्या पूछ रहे हैं कि कुछ बताओ. नहीं आप अभी क्या एक्सपीरियंस जो कैसा लगा कि माउंटेन से वापस नहीं, आप पहले जब माउंटेन्स क्लाइंब किए ना तो एक अलग सा एक्सपीरियंस होता है. बाद में थोड़ा तो डर लगेगा, थोड़ा तो कुछ मुश्किल रहेगा. तो कैसे लगा आपको पहले बाद में जब एक्सपीरियंस ज्यादा हुआ आपको? स्टार्टिंग में लाइक मैं आपको बताऊं तो उस टाइम क्योंकि आई बॉर्न इन द हिमालय तो मुझे इतना डर तो नहीं लगा था, लेकिन जिस एल्टीट्यूड पे मैं आई बॉर्न किया था तो उस एल्टीट्यूड से ऑलमोस्ट 8000 मीटर मुझे पहुंचना, तो मुझे काफ़ी डर का सामना करना पड़ा क्योंकि मैंने काफ़ी चीज़ें देखा अपनी लाइफ में, काफ़ी कैजुअलिटीज़ भी देखी और बहुत बहुत कुछ सीखा भी उस माउंटेन से. एंड ये कि एक अनुभव मेरे लाइफ में एक बिल्कुल चेंजिंग आ गई इतनी जल्दी. मैंने कभी सोचा नहीं था इतने कम उम्र में. Acha. So initially, having been born in the mountains, he didn't face any immediate fear, but obviously climbing up peaks that are 8,000 meters, it was pretty high, and it was a daunting task. The mountains taught him a lot, and he learned through that experience and how and what you need to do and how you navigate, and slowly getting there. And he's just, and each experience got him more energized. But अभी जोश भी सेम है अभी भी. Bibi, so he's equally as energized even now. So it didn't stop. You don't lose that passion, right? You don't lose the passion for the mountains. Amit, I want to ask how you were encouraged to keep going after big goals. And I don't want to be assuming, but I had conversations with Krishna before this, and I understand in India, the path is to work hard. And Krishna, maybe you can kind of help me with this question, but this idea that there's a path of, the responsibilities of work and study, and how you were able to kind of push through that and be able to focus on mountaineering. And maybe Chris, you can help me with that a little bit. Yeah. तो आप तो गांव से हैं, लेकिन आपके माँ बाप तो शेपर्ड थे, फार्मिंग करते थे. तो गांव में सब लोग तो पढ़ाई करो, खेत में काम करो, वो सब करना पड़ेगा. तो आपको कैसे ऐसे चांस मिला कि आप बाहर गए माउंटेनियरिंग के? तो कैसे चांस मिला, कैसे आप ये सब करके आए? इस चीज में इज वेरी गुड क्वेश्चन. तो इसमें फैमिली का बहुत सपोर्ट रहता है और मैं आपको बताऊं, आप दिस इज वेरी ट्रूली, आपने बिल्कुल सही कहा कि जहाँ पर हम बोर्न हुए हैं और फैमिली अगर आपके जैसे शेफर्ड और होम वर्किंग होते हैं तो आपको होता है कि थोड़ा सा इनकम का भी काफ़ी
प्रॉब्लम्स होती है। तो मेरा ऐसा नहीं था कि मेरा घर वाले मुझे चलो काम भी करने देते थे, घर पे काम भी सीखता था क्योंकि लाइफ में सीखना बहुत ज़रूरी है। और उसके अलावा आपको मौका भी दिया जाता था। तो फादर ने ऑलरेडी शेफर्ड रहते हुए हर माउंटेन्स को क्रॉस किया है और उन्होंने लाइव देखा हुआ है। तो उन्होंने कहा कि अगर मैं अपने बच्चे को मेरी तरह बनाऊँगा तो वो फिर अलग अनुभव होगा। तो शेफर्ड, लेकिन उन्होंने ये कहा कि आप एक जगह से दूसरी जगह घूमो, जाओ और अपने आप को एक्सप्लोर करो और अपने आप को जानो कि आप कितने फिट हो और आप क्या नहीं कर सकते हो। तो घर वालों का काफ़ी सपोर्ट था, उनकी वजह से मैं आपको बताऊँ, I climbed the Everest, Kanchenjunga, lot of mountain I climbed to 6,000 meter in my life first time. Maybe my age is 16 and my mother is always motivated me to कोई बात नहीं अगर आप फेल होते तो, लेकिन आप ये है कि गिव अप नहीं करना क्योंकि जब भी आपके फादर घर से निकलते थे तो उनको लगता था कि यार 6 मंथ के लिए वो आते नहीं थे विंटर्स में कई बार। तो वहीं से सीख मिलती है कि कभी भी आपको कहीं जाना है तो आपको ये है कि बहुत कुछ सीखने को मिलेगा हार के साथ-साथ। ऐसा नहीं कि आपको हर दिन ही हार देखने को मिलेगा तो। Acha. So he completely relates to when you grow up in a village. Yes, there is expectations of working hard, going to school. Income is not a luxury. You have to earn a lot. But he says that the support from his parents was crucial. Okay. His father being a shepherd, he had climbed mountains, and to him he motivated Amit to pretty much push the boundaries. He wanted him to go forth and see how it is and push the luck. If he fails, his mom said, don't fall down, just pick yourself up, figure out how you're going to push forward. And it's the motivation and the encouragement from his parents that's what made him succeed, and he feels he owes it to them for all of this. I love that. It's great that the support and encouragement came from mom and dad. And that's incredible. We've talked a little bit about your training that you took. I wonder if you could speak to us and for listeners a little bit more about the National Cadet Corps experience. I wonder if you could tell us a little bit about that. It is a part of Indian Army, NCC. So my first join NCC and is like to student for the how you are disciplined and work smartly, and it teaches. So NCC is like a discipline is very important, and how to work, how to smartly, and how to talk about each other, senior and junior, and very responsibilities. So I'm so lucky person to the join NCC. And basics, all teaching you can join the Indian Army. So you trained by the NCC is much better to the train you. And और उसके बाद जो एनसीसी थी मेरी लाइफ का एंड जिन्होंने मुझे इतना अनुशासन सिखाया था और अभी भी मैं उससे जुड़ा हूँ क्योंकि एक एनसीसी एक ऐसी चीज़ थी जिसने मुझे हर समय में माउंटेन हो, एज अ स्पोर्ट्समैन हो और एज अ फैमिली मेंबर्स में फैमिली के साथ जुड़ना हो, किस तरह से मुझे रहना है, वो मुझे एनसीसी ने काफ़ी हद तक आगे मुझे सिखाया है। और मैं आज जिस स्टेज में खड़ा होता हूँ और अनुशासन के तौर पे लोग मुझे पसंद करते हैं, तो मैं चाहता हूँ कि एज ए एनसीसी जो क्रेडिट सबसे ज़्यादा एनसीसी को दूंगा और अपने स्पोर्ट्स जो मुझे अपने फिजिकली फिटनेस के लिए मुझे आगे मोटिवेट किया। Acha. So with NCC, as he mentioned, it taught him a lot of skills. It taught him life skills. It taught him to be strong. It taught him to be fit.
and be physically strong, physically and mentally strong to do the climbing and the mountaineering that he does. Another thing that he points out is he owes it to the NCC and the training that he received to a lot of the life skills as well, whether it's sports, whether it's climbing, whether it's engaging with people, the social aspect of it. He feels he owes a lot to that training, and he feels that's what got him the basis and the grounding for whatever he's doing today. Yeah, and Chris, you and I spoke a little bit about NCC before this call. I wonder, just like, again, for context of listeners, can you just remind me what NCC is? Yes. So NCC is the National Cadet Corps. So think of it as the equivalent of ROTC here in the United States. It's something that right from schooling, people join in the NCC and they get skilled. Just like how we have the Cub Scouts, you get into Eagle Scouts, and then you go into some of the Army related training. It's very similar to that in India, and it serves as a precursor to any formal training you need to take from an army to get in the Army or anything like that. Got it. Okay. Yeah. Thank you very much for that. So, I love this, and we're gonna move into some of the big mountains, because Amit, your Instagram is mind blowing. Some of the reels, you just sent me a reel today of you on Annapurna, and there was a giant avalanche coming down in the background, and I want to get to that and talk to it. Before we get there, just a couple other things on your website, or on your CV that you sent me. There's a quote that says, "The modern world is encroaching upon many traditional ways of living. Much is thrown away and forgotten. I'd like to represent and promote the Kinnar culture in order to preserve my tribal background." And I just wonder if you could speak to this a little bit. सर कि अभी जो मॉडर्नाइजेशन जो हो रही है, जो हमारे जो पूरे इंडिया में, तो ट्राइबल कम्युनिटी कहे या बहुत सारे अपने अपने डिस्ट्रिक्ट या बहुत सारे अपने स्टेट की जो कल्चर है, वो धीरे धीरे वेस्टर्न लोग अपना रहे हैं। तो मैं इसलिए अपने कल्चर को प्रमोट कर रहा हूँ, बिकॉज जो हमारी जो पुरानी जो पूर्वजों की देन है, उससे हमारी जो आइडेंटिटी है, जैसे मेरा नाम, माय नेम इज अमित नेगी, नेगी इज लाइक आवर आइडेंटिटी। तो इसी की वजह से मेरी पहचान है हिमालयन में। और जो हमारा जो ट्रेडिशन है, लाइक वेरी ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर हमारा जो ट्रेडिशनल कल्चर, जो पहले के समय में कि टीवी नहीं होता था, सेल फोन नहीं होते थे, तो उस टाइम हम आपस में कनेक्ट होते थे, लाइक फैमिली मेंबर्स, एंड उसके बाद जो हमारे ब्रदर्स आपस में मैसेज कम्युनिकेशन, या कोई आपके अच्छे या बुरा हो, तो आपस में जुड़ने के लिए एक हमारा कल्चर होता था। यानी इन हिमालय वेरी फेमस फेस्टिवल लाइक फ्लावर फेस्टिवल, जो बहुत सारे लोग, जैसे घर से आपकी मान लो बहनें शादी करके कहीं और जगह जाते, तो उनको आपस में जोड़ने के लिए वो फेस्टिवल मनाया जाता था। तो लोग अपने आपस में लोग मिलते थे। दिस इज माय स्ट्रॉन्ग, हमारी जो एक पहचान थी, और ये धीरे-धीरे लुप्त भी हो रही है, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि उसको मैं फिर दोबारा बरकरार कर सकूँ। और फाइनली मैंने पूरे वर्ल्ड में शायद पहली बार मैंने स्टार्ट किया एवरेस्ट से। जो मेरी जो किन्नौरी कल्चर कैप था, वो अभी मेरे पास अभी तो नहीं है, तो मैं आपको दिखा देता। तो उसको मैंने टॉप एवरेस्ट से शुरुआत की, कि सबसे पहले बड़े लोगों से, यानी आप जब तक बड़े लोगों को रिस्पेक्ट नहीं दोगे, तब तक आपको रिस्पेक्ट कहाँ मिलेगा। इसलिए हमें अपने पूर्वजों को भी नहीं भूलना है। एंड देन आई माय कैब, तो एवरेस्ट, कंचनजुंगा, अन्नपूर्णा में दिया। और मैं आगे भी अभी यूथ को यही कहता हूँ कि अपने कल्चर को ना भूले, एंड और अपने जो मॉडर्नाइजेशन, ठीक है, आप उसको भी ज्वाइन करो, बहुत ज़रूरी है। समय के साथ चेंज होना भी बहुत ज़रूरी है, लेकिन हम कहते हैं कि हम अपने कल्चर को भूल रहे हैं, लेकिन अगर आप अपने बुजुर्गों के साथ नहीं बैठोगे, अपने एल्डर्स के साथ नहीं बैठोगे, तो आप कल्चर को कैसे एक्सेप्ट करोगे? As you know, due to modernization, we are the lefting our ancestors, ancestors' values, and we say
that value was good for our health and for life, because due to modernized life is more than uh, pursue like the most of the uh, just like big big मतलब explain like a corona अगर उस आप उसको उससे match कर सकते हैं like, and as a part of Kinora travel would like promote to our culture which like my identity, my culture which is my identity, and I'm going to be, and so I want to save my travel, and I want to now uh, now want to be now be everyone to the my unique culture which is very inspiring me, just like is inspiring me. And my area people is like 6 months is very heavy snowfall, but he like hard work and how to uh, survive that condition. So I'm so inspiring in my youngers, and elders is inspiring me every day, every time. So there were some little nuggets that Amit shared when he was talking in Hindi as well, Scott, which was India as a whole, as a country, is getting where very modernized and very westernized. And what he is finding is people are not holding on to their old, historical values and the culture. And he feels that the mountain culture that he grew up in was very sacred. there Mm, were there was a lot of camaraderie before cell phones, before TVs even existed. People mingled in town. There used to be a festival of flowers that people engaged and gathered, and there was a lot of camaraderie among people. And he feels that he wants to preserve a lot of that, and he wants to make sure that despite the westernization, he understands you need to move along with time, but at least preserve as much as you can with the mountain culture as we see it. So I want to ask a deeper question. How do you do that on the mountain? Like, I mean, for me, like nature is a place where we can just all connect with like the very primitive most aspects of being human, right? And that's what I love about this is because we're all on here and we're just human, and we're talking about being out on the mountain. I'm just curious, how do you do that on the mountain? तो आपका संस्कार आप कैसे आप जब पहाड़ जाते हैं ना, तो आपका संस्कार कैसे प्रिजर्व करते हैं, क्या करते हैं आप? माउंटेन्स पे लाइक तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मुझे माउंटेन में जाके अपनापन इसलिए लगता है क्योंकि लाइक जहाँ पे मैं बॉर्न हुआ हूँ इन माय माउंटेन लाइफ, एंड माय माउंटेन इज माय मदर, लाइक स्काई इज माय लाइक a father always blessing me, and every time emotional moment I capture in the early in the morning time. And the river is like okay, you are never give up, यू नो तो आप कभी भी अपने आप को अकेला मत समझो माउंटेन पे। माउंटेन या कोई भी एनी वर्क इज नॉट इजी। तो बहुत इमोशनल मैं जुड़ा हूँ। आई ऑलवेज इमोशनली टू द वर्क, एंड रिस्पेक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द elders like mountains, always blessing and skill to uh, आपको नए नए तरीके आपको बहुत कुछ सिखाता है लाइफ के, लर्न न्यू थिंग्स एंड न्यू टेक्निक्स, एंड एवरी सम टाइम इज वेरी डेंजर। तो बहुत कुछ लाइफ में सीखने को मिलता है। Got it. So he feels one with mountains whenever he's climbing. He feels like the range is his father, the skies are his mother. The river is encourages him to keep on going. The river keeps running. It never stops. So it encourages him to never stop, keep on running. And he feels every little thing that he does on the mountains encourages him, as well as gives him new learnings to take and
adopt in a future climb that he does. I love this. Thank you so much for that. Amit, one more question before we get into some of the summits. You have in your career, both mountaineering and your professional athlete career, you've experienced a lot of firsts. So one example is you were the first Indian civilian to climb Kanchenjunga with another country's army. I wonder if you could just kind of share with listeners some of these firsts that you've had and what they were like for you. I think one of the country military, even in my country, never allowed to the civilian work with them without condition, because uh, every country military is some privacy is privacy is very important. And I am so lucky, and privacy, some like security, and I'm so lucky to the join to the another military, and he also like uh, and and I'm so lucky person to the with the Nepali army give me a chance to the okay, you are come and we are both in climb to the Kanchenjunga. And it was very difficult to the as a civilian person to the part of as a military to the joint expedition. And I'm so lucky. And and uh, I'm so you know my inside is like I also joined to the Indian Army, but unfortunately I never joined to the army. In case like I'm luckily to the uh, कि मैं लकीली था कि मैं नेपाली आर्मी के साथ ज्वाइन हुआ। वैसे तो मैं लाइफ में ये था कि इंडियन आर्मी भी ज्वाइन करता था, तो उस टाइम नहीं हो पाया। तो लेकिन मुझे सीखने को मौका मिला ज्वाइन करके, और डील करने का मौका मिला कि किस तरह से कि एक्सपीडिशन में क्या कुछ सीखने को मिलता है, और मिलिट्री के साथ मिलिट्री क्या और मतलब किस तरह से अचीव करती है। Acha. So he feels it's an absolute privilege to work with the army. And as he stated, especially when it comes to the army, there's a lot of security protocols, privacy protocols, and he feels even though his passion was to join the Indian army after the NCC, he feels that the Nepali army embraced him. And even though there were civilians that are not allowed to engage with the army and do whatever anybody could do, he feels blessed to have gotten the opportunity to train with them. And he feels, having trained with the army, he got a lot more skilled in everything that he does, with climbing, the climbing skills, the physical fitness skills, and so forth. So he feels truly blessed for having trained with them. Yeah, I mean, that sounds like it was a real privilege. I'm curious how that came to be. तो आपको नेपाली आर्मी के साथ काम करने का मौका कैसे मिला आपको? मैंने कभी सोचा नहीं था। आई एम टू मच कंफ्यूज बिकॉज 2021 I achieved Everest, and immediately I select to the next mountain, तो कभी भी कोई भी select नहीं करता है कि और रेस्ट करता है। Almost 1 year people are resting and then start the next 8,000 meter. तो मैंने जब 8,000 meter कंचनजुंगा की, and I reach in the Nepal in the base camp, no idea kaun sa, who is my partner, who is like organization. And finally one chopper is come and say, oh, you are Amit, okay, you and we are both climb the Kanchenjunga. तो मैं बहुत शौक था उस टाइम। नेपाली आर्मी के ब्रिगेडियर साहब पहुंचे थे इन द कंचनजुंगा बेस कैंप, एंड लकीली और मैं मिला, एंड तो बहुत खुश था। और उन्होंने कहा कि हमें भी सीखने को मिलेगा जब उन्होंने ये कहा। एंड क्योंकि जब कोई बड़ा आदमी आपको कहता है कि हम छोटों से भी सीखने को मिल रहा है, इधर से भी सीखने को मिल रहा है, तो उन्होंने मुझे पहले ही बहुत मोटिवेट किया। और उनकी पूरी टीम से मुझे मुलाकात की। एंड लकीली कंचनजुंगा जो नेपाली आर्मी का फर्स्ट पहली बार एक्सपीडिशन था, अभी तक
एवरेस्ट के बाद उन्होंने कंचनजुंगा एक्सपीडिशन नहीं की थी, तो उसमें मैं लकीली पार्ट था, पहली बार थी फर्स्ट इंडियन, और उसमें लीड करने का मुझे मौका मिला। एंड फाइनली 7 May I am top of the Kanchenjunga with Nepali army. Wow, wow. So it was, he happened to come across this. So he had climbed Everest, and usually what happens is people climb Everest, they come back, they take a break. But he did not stop. He did not take a year break. He decided to go on to climb Kanchenjunga. And then at that time, the Nepali army was also planning on doing scaling Kanchenjunga. And one of the top officers talked to him and was really surprised at his perseverance in doing Everest and then immediately climbing Kanchenjunga. And his as a top officer, Amit was really humbled by his comment that I'm a senior officer, but I'm going to learn from a younger guy like you. And I think that's great. And he embraced this opportunity, and he even led the team to scale Kanchenjunga and made it to the top and showed how it is done. Wow, that's amazing. What an honor and what a cool story. Yeah, and Sure sir, is. एंड इसी बीच में आई विल सबमिट कंचनजुंगा एंड कम बैक, एंड तो मुझे कहीं से मैसेज मिला, एंड आई एम फर्स्ट टाइम मुझे वेस्टर्न कमांड इंडिया के वेस्टर्न कमांड के लेफ्टिनेंट जनरल नवके खंडूरी सर ने मुझे पहली बार किसी सिविलियन को सम्मानित किया। सो आई एम लकी पर्सन एंड आई एम रियली रियली इमोशनल। मैं बहुत इमोशनल हुआ था उस समय, लेकिन मुझे काफी अच्छा लगा। Yeah, he was even awarded by the Western Command, and he feels truly honored and humbled at the same time that he was presented this award. Yeah, that is a true honor. It's an incredible story. So let's move on to some of these high peaks. I want to talk about Mount Annapurna. This is 8,091 meters high, and it's not the tallest. Everest is the tallest, but it has been called the deadliest mountain on Earth. And I just wonder if you could tell us about this mountain. Annapurna, seriously, Annapurna is like a beautiful mountain. Not I'm sure, but it's very danger mountain I face in my life, because many avalanches, strong wind, और इतने सारे मतलब उसके challenging है. Almost you reach in the camp 1 that started with more danger in Annapurna. So almost like a steep, highest 65-degree angle or 75-degree angle उसका summit point है, तो more than danger. और जब भी मैंने दूर से देखा लाइक ठीक है ये माउंटेन ठीक है अच्छा दिख रहा है, जब मैं कैम्प 1 से ऊपर चला तो वो और भी डेंजर होने लगा, क्योंकि उसकी जो विंड थी वो 100 पर आवर्स की किलोमीटर की पर आवर्स चलती थी, और बहुत ही डेंजर। किसी ने बिल्कुल सही कहा है, एंड कि दुनिया की सबसे बिगेस्ट माउंटेन रेंज जो फैलावट में है और बहुत डेंजर, जो अपने एवलांच के लिए फेमस है एंड स्ट्रॉन्ग विंड के लिए फेमस है, वो अन्नपूर्णा। एंड वैसे भी जो अन्नपूर्णा माँ को आप ये कहते हैं लाइक हमारे जो हिंदुज्म में जो अन्न की देवी, जहाँ से हम खाना खाते हैं, तो वो भी एक रिस्पेक्टफुल है। एंड मैंने काफी लोगों को भी खोए वहाँ पर, जो फेमस आई थिंक नॉइल्स है ना, इस वेरी फेमस माउंटेनर जो मेरे साथ ही होते थे, वेरी फेमस माउंटेनर, उन्होंने मेरे कैंप 4 में ही दम तोड़ दिया था। तो ऑलमोस्ट 12 टाइम एवरेस्ट समिटर थे वो, और बहुत फिर भी मैं अपने आप से नहीं हार मानता था, क्योंकि हमेशा मदर हमेशा यही चाहती है कि जब तक आपको प्यार से तो रखेगी, लेकिन जब तक माँ का जो बोलते हैं ना दरार और डांटना जब तक वो चलता नहीं रहेगा, तो आप तब तक ऊंचाइयों में नहीं छूओगे। Yeah. So he says you're absolutely right that it is one of the deadliest mountains. He talks about the wind. Sometimes it can go as high as 100 kilometers per hour.
Sometimes the ascent, after you go past Camp 1, the ascent sometimes can be 65 to 75 degrees. But he feels Annapurna, that the mountain is named after our throat and how we swallow our food, right? It is the main, duct through which we eat. And he talks about, it's just like the mother. Annapurna is just like your mother. You get discipline. You get this. You get yelled at, but then all these factors like the wind and the avalanches are like that. But then you persevere. You listen. You listen to your mother, and then you slowly make the progress. And that's how he scaled. And he goes, it was tough, but he took every experience, every little thing in stride, and slowly made the progress and worked towards climbing up. Wow. I love those metaphors. Can you speak a little bit to what makes Annapurna different from Mount Everest? Annapurna is like Everest is okay, world highest mountain. This is true. It's like but challenging is like Everest is too challenging. It's like first is Khumbu Glacier and second is like Hilir step. It's very difficult. But it's Annapurna is you can reach in the base camp and you started face lot of phases like camp 1, camp 2, and camp 3. Camp 4, too much danger. Camp 3, camp 4, too much danger. Every day, every minute, big avalanches. I think you saw in my videos in my Instagram. And मैं भी थोड़े थोड़े बोल्डर से बच गया था, क्रेवासिस एंड बिग एवलांचेस से मेरे सामने से गुजर के चले गए थे एंड जस्ट लाइक 1 मिनट एंड आई एक मिनट की बस वो देरी थी, काफी बड़े बड़े एवलांचेस मेरे सामने से गिरे थे और पूरे वर्ल्ड की जो डेथलेस्ट माउंटेन में अन्नपूर्णा का नाम भी है, लाइक more than two another mountain like Naga Parvat and the K2 is more than danger. तो अन्नपूर्णा इसलिए डेंजर है क्योंकि उसका जो समिट है वो बिल्कुल स्टीपली है, वेरी वेरी स्लो, बिल्कुल स्लीप। तो उसका जो समिट है वो बिल्कुल सीधा भी नहीं है, तो उस वजह से उसको और भी डेंजर बनाता है। तो अभी भी बहुत लोग कोशिश करते हैं और 100 में से 70% चांसेस उसके है अनसक्सेसफुल के, 30% उसके चांसेस सक्सेसफुल होने के। तो उसका सक्सेसफुल चांस इज लाइक लिमिट, very limit. So he talks about, when you think about Everest, it is the tallest mountain, but when you talk about the degree of difficulty, Annapurna is by far the hardest mountain to climb. And he speaks of instances where there are times when he goes from camp 1 to camp 2 to camp 3, he has literally missed a boulder of an avalanche by a minute. It literally passes in front of him or behind him, and he barely makes it past. And he's been lucky enough not to have been caught in one, but he feels that that's what makes Annapurna so deadly, and the success rate of people actually ascending the mountain is only about 30%. And he talks about getting all the way to the top. He says the top is not flat at all. It is extremely steep. It is extremely steep, and it is not stable. So it makes it even more tougher compared to Mount Everest. So this obviously begs the question about fear, right? I'd love to just get into the topic of fear and just spend some time talking about fear, because it seems to me that somebody that tackles a mountain like this has no fear, but I know that's not the case. So can you tell us about how fear comes into your life and your climbing on mountains such as Annapurna? तो आपको कभी डर कभी लगा आपको, क्योंकि आप अन्नपूर्णा के क्लाइम कर चुके हैं, कभी डर लगेगा आपको? नहीं, मैंने पहले मैं आपको बताऊं सीरियसली, मेरी लाइफ में जब मैं कैंप 2 से कैंप 3 से कैंप 4 की तरफ जा रहा था, तो वहां पर एक जगह वर्टिकल आई थी, ऑलमोस्ट 90 डिग्री का वॉल था। तो वहां मैं बहुत डरा था
बहुत ही मतलब मेरी जिंदगी का ऐसा पल था कि छोटा सा मिस्टेक, स्मॉल मिस्टेक, यू विल डाई इन द डीपली crevasse। तो वहां से मैं उस दिन को याद कर रहा था कि मैं अपने ट्रेनिंग को, जिस तरह से मुझे ट्रेनिंग कराया गया और जिस तरह से बस आपको आगे देखते चलना है और अपने आप को, बस उस समय मेरी जो बॉडी, मैं आपको रियलिटी बताऊं तो बहुत कांप रही थी, बहुत बहुत ही, मतलब बोलते ना, मतलब वाइब्रेट हो रही थी, तो मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाया था। तो फाइनली जो थोड़ा सा जब ऊपर जाने का जब मैं रियलाइज किया कि नहीं यार मैं कर सकता हूँ, और मैं मतलब कर रहा था, अपने आप को मोटिवेट कर रहा था। तो अब आगे तो डर तो इतना नहीं लगेगा जितना मुझे अभी अन्नपूर्णा ने डर दिया था, बहुत फियर। थोड़ा डर तो लगता है कि जब एवलांचेस गिरे थे तब अभी भी डर लगता है, थोड़े जो मेरे दोस्तों को मैंने खोए थे तब भी अभी थोड़ा सा डर तो होना चाहिए मेरे हिसाब से। कोई भी ऐसा माउंटेनर जो इन फ्यूचर अपनी लाइफ में आएगा तो विदाउट डर के वो क्लाइंबिंग नहीं कर सकता, तो एज अ डर होना चाहिए, डर होना। So his toughest test was when he was climbing Annapurna past Camp 4, where it was almost a 90-degree angle, and his heart started pounding and he started getting very jittery. He's not afraid to say he there was fear, but then he recollected all his training and what you need to do, how do you stay positive, and the more and more he slowly started to make the way up and started taking one step at a time, the fear started to ease. His heart started getting a lot, his heartbeat started getting a little bit more calmer. But his point is fear has to be there when you scale these mountains. You cannot be fearless. There are things that you don't know. And it's something that's there, but he is less fearful having scaled these tough mountains, especially like Annapurna, and he feels he is much stronger and has built a lot more physical skills and climbing skills to be able to do what he's doing today. So is some of the motivation behind climbing a mountain like Annapurna the uh, desire to try to overcome those fears? Interesting. तो ये सब अन्नपूर्णा ये सब क्लाइम के है ना, तो ये सब डर मिटाने के लिए था कि ऐसे ही चैलेंज था आपके लिए? नहीं, मुझे, मैं आपको रियलिटी बताऊँ तो मैंने अपनी लाइफ में एक चीज़ फेस किया था, जो कि इस डर तो नहीं सर, मैं काफ़ी अपने आप से मतलब रिजेक्ट फील कर रहा था, क्योंकि मैं पहले एसएसबी दे चुका था बीच में। भोपाल, इलाहाबाद, कपूरथला मैंने सीडीएस भी दिया था, तो काफ़ी जगह कॉन्फ्रेंस आउट हो गया मैं, काफ़ी जगह। तो अंदर ही मैं फ़ील करता था कि मैं मतलब अपने आप को, मतलब है कि लोग मुझे क्यों रिजेक्ट कर रहे हैं। तो मुझे एक मौका था कि अपने आप को स्टैंड करने का, अपने आप को प्रूव करने का कि नहीं यार, एक ऐसा माउंटेन जो वर्ल्ड की डेडलीस्ट माउंटेन है, शायद ये भी मुझे रिजेक्ट ना कर दे। और मैंने इतनी ट्रेनिंग भी की थी, अंदर डर भी था, लेकिन मुझे प्रूव करने का मौका तो मिला और बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। तो माउंटेन ने मुझे ये सिखाया कि चलो ठीक है, आपने आज मुझे क्रॉस किया, मेरे बाद और भी माउंटेन्स आएँगे। लेकिन ये चीज़ ज़रूर रखना लाइफ में कि जहाँ से आप आए हो, वो चीज़ आपने नहीं भूलना। आपका ग्राउंड लेवल क्या था? तो वो चीज़ मैं अभी भी फ़ील करता हूँ। So this was a challenge for him to overcome these, because earlier in his life, whether it was seeking a job or whether it was around his studies, he had felt rejected in on a couple of fronts. Hmm. And when he took up mountaineering and all the training that he had done, he took it up as a challenge. And he did not want another rejection from the mountain. And Wow. he chose to prove himself, and he wanted to show, I am capable of something. I do need to persevere. I do need to be strong and do and scale what I need to. So that was kind of the inner motivation for him, having gone through a couple of rejections earlier in his life, to do something and prove to himself that he is capable and he is not a failure all through.
Yeah, well done. You've done a great job proving that. So I guess my next question from that is you've accomplished so many incredible things, but yet your goals to continue to climb more mountains, there's a lot more that you want to do. So I'm curious, are your motivations changing over time? Yes. तो तो आप ये सब किए, आप एवरेस्ट क्लाइम किए, अन्नपूर्णा क्लाइम किए, तो आपका भूख क्लाइम करने का भूख मिटा दिया कि और कुछ क्लाइम करना है, तो मोटिवेशन क्या है आपका? माय मोटिवेशन अभी लाइक अभी और भी क्लाइम करने हैं, बिकॉज दुनिया की अभी वैसे 14 ऐसे माउंटेन हैं जो अभी तक इंडियंस ने कंप्लीट नहीं किया है, जो पूरा जो वर्ल्ड की 14 माउंटेन्स है, बिगेस्ट टॉलेस्ट माउंटेन. सो होपफुली अभी माय ड्रीम इज माय प्रोजेक्ट ऑफ वर्किंग टू द नेक्स्ट ईयर टू द 3 माउंटेन्स. लाइक मे बी मैं अभी अगर नाम डिस्क्लोज तो नहीं करूंगा, अभी थोड़ा टाइम है, लेकिन डेफिनेटली कि वो शायद वर्ल्ड की 4, 5 एंड 7 हाईएस्ट माउंटेन है. तो मैं अभी उसको कॉन्कर करने के लिए सोच रहा हूँ, और आगे भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जितने अपने आप को और फिट रख सकूं. लेकिन आपको पता ही है कि भूख तो लगती है, लेकिन वो भूख मिटाने के लिए वो पैसे भी ज़रूरत है, लाइक स्पॉन्सरशिप. तो दिस इज़ बिग प्रॉब्लम. तो अभी कोशिश कर रहा हूँ कि लाइक पीपल आर सपोर्टिंग मी, एंड होपफुली कि मैं उनके कुछ अच्छे काम के लिए और उनके बैनर्स या कुछ उसको ले जाऊँ, और अपने जो लक्ष्य है वो भी पूरा करूँ, और यूथ के लिए एक अच्छा सा टारगेट सेट करूँ. क्योंकि आज की जो जनरेशन है वो बहुत ही हार्मफुल ड्रग्स और उससे थोड़ा वो उसमें बिजी हो रहे हैं, नशों में. तो मैं चाहता हूँ कि कोई ऐसी एक्टिविटी, स्पोर्ट्स हो या माउंट ट्रेनिंग फील्ड हो, तो वो ऐसे उससे जुड़े रहे, और जिससे वो अपना जो क्या है कि आगे का लक्ष्य वो कंटिन्यू कर सके और अपने लाइफ में बिजी रहे, और कोई भी मतलब एक नशे पे फोकस ना करे. So he feels there are 14 tall peaks Yep. across the world, Mhm. and an Indian has not scaled all 14 peaks. To him, that is Amazing. one of the goals. Amazing. So his dearth for climbing more peaks never stops. He wants to keep climbing. He doesn't want to disclose yet what are the other 3 peaks he's going to climb next year, but his target is to climb 3 peaks. More importantly, through this, he wants to be an ambassador for the youth of the world. He says that there's a lot of drugs and alcoholism that's prevalent across among the youth, Mhm. that he really wants them to be active, whether it's sports, whether it's mountaineering, whether it's climbing, whatever the case may be. Show them a different, more active path, and he feels he can be the champion and ambassador to encourage them to do and take a more better path compared to drugs and alcohol. Well, and I want to tell you, you're doing a brilliant job at that. You're inspiring youth and adults alike. You're inspiring me. Again, like if listeners get one thing from this episode, and that is to go to your Instagram and just see the work that you're doing, like it will have been worth it, because that's incredible. But I think to take this to the next step, because if you do visit your Instagram page, you're going to see not only a lot of amazing imagery on mountains, but also you involved in your community. I've seen things on your Instagram of you speaking to groups and being with kids. And I would love to hear a little bit more about some of the things that you're currently doing, speaking to groups and teaching and guiding and providing inspiration for kids. यस, बिल्कुल, बिल्कुल. मैं अपने यूथ से इसलिए जुड़ रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है कि अब अगर आप आज की जनरेशन में अगर आप यूथ से नहीं जुड़ोगे, तो मेरे ख्याल से फिर आपको वो सपोर्ट भी नहीं मिलेगा, और यूथ को ये चीज़ पता भी नहीं चलेगा. क्योंकि आपने देखा होगा मेरे इंस्टाग्राम में, यू नोटिस माय इंस्टाग्राम, आई एम गोइंग टू द स्कूल प्रोग्राम्स एंड माय कॉलेजेस प्रोग्राम एंड माय यूथ फंक्शंस. एंड तो मुझे वहाँ जाकर
कि मुझे सबसे पहले और जगह से मुझे अपनी कम्युनिटी में जाना इसलिए मुझे ज़्यादा ज़रूरी लगा, क्योंकि बोलते हैं ना कि सबसे पहले अपने घर को सँभालना बहुत ज़रूरी है। तभी आपको बाहर के लोग आपको जान सकेंगे और बाहर के लोगों को आप इंस्पायर कर सकेंगे। एंड मैंने अपने लाइफ में एक चीज़ ये बहुत सीखा है कि घर से ही, कि घर में हमेशा ये कहते थे कि जो मेरे मॉम डैड है, कि पहले जो हमारे जो पूर्वजों का जो संस्कार जो दिए गए हैं, जो हम निभा रहे हैं, वो आइडेंटिटी उसको खोना मत। और आने वाली जनरेशन को भी बताना कि ठीक है आप मॉडर्नाइज़ भी हो कोई बात नहीं, लेकिन अपने जो कल्चर है, अपने जो फैमिली मेंबर्स है, जो हमारे जो बुजुर्ग है, एल्डर्स है, उनके साथ भी बैठना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे जो न्यू जनरेशन है वो क्या है कि एजुकेशन के साथ वो बाहर चले जाते हैं, तो हमारे जो बुजुर्ग है उनके साथ टाइम स्पेंड नहीं करते। तो आजकल कहते हैं ना कि कॉमिक्स और वो चीज़ें तो हम पढ़ते हैं शौक से, लेकिन जो बुजुर्गों से दिया हुआ, बुजुर्गों के साथ बैठे हुए उनसे पढ़े, तो वो सबसे रियलिटी आपको मज़ा आएगा और वो सिखाएगा, और आपके कल्चर को भी वो शायद भूलने नहीं देगा, क्योंकि मैं भी अभी आप है, सर है, लाइक सेल फ़ोन अभी आज का है, लेकिन उस समय सेल फ़ोन होता नहीं था। तो मेरे ख़्याल से वो कुछ 1-2 और जनरेशन बची है, जो हमारे जो पूर्वज बचे हैं, जो बिना सेल फ़ोन के हमें पूरे ट्रूली कहानियाँ और ट्रूली सब कुछ हमें इंस्पायर करते थे। शायद हमें ये चीज़ें उनके साथ स्पेंड करना चाहिए लाइफ़ में। तो यही मुझे इंस्पायर करती है, और मैं प्रॉमिस तो मैं 100% ये ज़रूर कहूँगा कि मैं जिस भी माउंटेन को क्लाइंब करूँ, तो मेरा ट्रेडिशनल वो, या मेरे हिमाचल का हो, मेरे गाँव का हो, या मेरे कंट्री का जो लोग पहनते हैं, तो उसको लोगों तक पहुँचाऊँ, और लोगों को इनवाइट करूँ कि प्लीज़ आप प्लीज़ वेलकम टू द माय होम, विज़िट अ ब्यूटीफुल कल्चर एंड स्पेंड ब्यूटीफुल नेचर। सो दिस इज़ वेरी ब्यूटीफुल मैसेज। So so he feels that his all his engaging with the youth, etc., comes from his mom. Mm. And his mom always told him, her ancestors taught her things that she passed on to him. Her father, her uncles did the same. He needs to carry that message onward. He feels that that is one of the strongest messages. You can read comics, you can read books, but there are messages and learnings that come from our elders and our ancestors that he wants to pass on to his people. And he feels that he needs to start with his own community first before he expands to other communities. And one other thing that, yeah, I failed to mention when we were talking through earlier, Scott, was he talked about he has this passion to climb, but for everything there's, you need funding, you need money. So he wants to make sure that he is carrying the right message and making sure that he's able to do what he's able to do to climb mountains, but also carry the message of how to take the kids off the streets and become better human beings. And he feels that that starts with the speeches and the work that he does at the schools, at the colleges, at the universities to help foster that message. Thank you. And that's a really great lead in to the next question, because I did want to bring attention to the fact that, Amit, you are raising money to be a professional climber and to fund future climbs. And I know that you have offered packages for sponsors that want to connect with what you're doing for opportunities to promote their brand. And I want to just give you the opportunity to talk a little bit more about what you're offering and what can happen when somebody connects with you for any sort of financial sponsorship. हाँ, तो मैं चाहता हूँ कि जो मेरे जो जितने भी जो स्पॉन्सरशिप है, जो मुझे स्पॉन्सर करना चाहते हैं या सपोर्ट करना चाहते हैं, तो मैं उनको श्योर ज़रूर करना चाहूँगा कि मैं जिस भी माउंटेन में या जहाँ भी जाऊँ, तो एक प्रमोटिंग का काम मैं ज़रूर करूँगा, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पे जहाँ भी मैं क्लाइंबिंग करता हूँ हाई माउंटेन पे, तो वो एक बेनिफिट होता है कि जितने भी जो मेरे स्पॉन्सर होंगे, उनको मैं ले जाऊँ और वहाँ पर भी उनका एक एडवर्टाइज़मेंट हो,
और जिससे मेरा जो लक्ष्य है मैं उसको पूरा करूं, क्योंकि विदाउट मनी जो आजकल है ना, तो आप माउंटेन्स तो छोड़ो, आप माउंटेन के बेस कैंप तक भी नहीं जा सकते, क्योंकि माउंटेन कॉस्टली है। तो एटलीस्ट अब धीरे धीरे माउंटेन कम्युनिटी भी बहुत काफी स्ट्रांग हो रही है, मैंने देखा, और माउंटेन पे लोग बहुत जाना चाहते हैं। तो मैंने अभी काफी नोटिस किया कि एज को देख के लोग ट्रैकिंग नहीं कर रहे हैं, अपनी फिजिकली फिटनेस के लिए कर रहे हैं, वो बहुत अच्छी बात है। तो क्योंकि इन फ्यूचर जो हम सिटी पे वर्क करते हैं, सिटी पे रहते हैं, तो मैं चाहता हूँ कि लोगों को बाहर आना चाहिए और नेचर से जुटना चाहिए। और बाकी जो मुझे स्पॉन्सर करना चाहते हैं, तो मैं लिंक्स आपको दे दूंगा। मैं जिस टीम के साथ जा रहा हूँ वो कहलूर एडवेंचर टीम है, जो इंडिया से मुझे सपोर्ट करती है, जो इंटरनेशनल जिसे मनी ट्रांसफर का। तो कहलूर एडवेंचर जो आप जिसमें वो वर्क कर रहा हूँ, जिसका मैं बैनर ले गया था, तो उसके थ्रू मैं आपको डिटेल सेंड कर सकता हूँ, उसमें आप सपोर्ट कर सकते हैं मुझे। अभी जो मेरे नेक्स्ट माउंटेन है 2024 में 3 माउंटेन, तो उसमें जितने भी लोग सहयोग कर सकते हैं, क्योंकि विदाउट मनी तो बहुत मुश्किल है। बाकी अपने तरफ से भी मैं हार्ड वर्क कर रहा हूँ, क्योंकि अभी भी मैं ट्रैवलिंग टू द माई सिटी टू अनदर सिटी, तो बहुत मुश्किलें फेस करने को मिल रहा है। लेकिन मुझे भी अभी भी उम्मीद है, जिस तरह से मुझे एवरेस्ट, कंचनजुंगा एंड अन्नपूर्णा मुझे क्लाइंबिंग करने का मौका मिला, तो अभी भी गिव अप तो नहीं कहूँगा, नेवर गिव अप इन माई सेल्फ एंड ऑलवेज स्टैंड टू द माई कंट्री। तो हमेशा स्टैंड रहूंगा। So he feels it's an honor and privilege to have climbed the mountains that he has so far, and he feels that he will carry the brand for anyone that's helped sponsor him, do whatever advertising that he needs to do. But more importantly, he feels the sponsorship helps in two ways. One, to help foster the message that he is trying to bring forward. Second, even if it is people in the city, he wants them to get out and be one with nature. Cannot attest to that more. I love that. That connects to us here Right? on Inspire Campfire. That is correct. That is correct. And he feels that's the message he wants to convey. And the best he can do is, he has he has the links to how you can sponsor him and do what is needed. But he feels that he will carry the brand and do whatever advertising or anything that we need to do to promote. And that's his message. Great. Well, if there are links, Amit, that we can share on our podcast show notes that can direct people to ways that they can connect with you and investigate sponsorship opportunities, we'll certainly be happy to put those in our show notes. Yes. तो स्पॉन्सरशिप के लिए जो भी करना है, आप जो भी लिंक है आप भेजो उसको। जी, वो अपना इंस्पायर कैंपफायर के साइट पे डालेंगे, तो कोई भी कनेक्ट करना है वो कर लेंगे। जी, thank you so much, sir, and thank you. Yeah, I want to ask you, based on just this whole conversation and your experience climbing big mountains and the journey that it's taken you to get to this point, including, your time as an athlete, all of your time, we can't gloss over the amount of training that you've taken, your ability to be able to climb these mountains. Part of that was the intense education and training that you took to be able to do that. Like, you didn't just show up and start climbing a mountain one day. You had an exceptional amount of training. But all of your experience has led you up to this point. But I'm curious for people all around the world, young people, old people, that are looking at your story and listening to this and then inspired by what it is that you do. I wonder what advice you have for people that would love to become a mountaineer. अच्छा, तो आपका कोई एडवाइस है कुछ जो अभी सिटी में हो, कभी भी क्लाइंब नहीं किया हो, तो आप इतना ट्रेनिंग किए, इतना क्लासेस किए, तो आपका एडवाइस क्या है उन लोगों के लिए? मैं एक चीज जरूर करूंगा कि एज ए
मैं अगर जितना मर्जी पहाड़ से बिलोंग करता हूँ, कई बार मैं लोगों से सुनता हूँ कि पहाड़ी लोग पहाड़ तो इजीली क्लाइंब कर सकते हैं, तो ये बिल्कुल गलत है कि विदाउट ट्रेनिंग, विदाउट प्रिपरेशन आप क्लाइंब नहीं कर सकते। आप जहाँ से भी बिलोंग करते हो, अगर आप प्रॉपर तरीके से आप ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो आप अपने जो अचीव है, वो एवरेस्ट क्यों ना हो, एवरेस्ट को आप 10 बार भी क्लाइंब कर सकते हैं। तो लेकिन और सिटी के एरिया में जितने मेरे दोस्त हैं, मैं उनको ये मैसेज ज़रूर कहना चाहूँगा कि ठीक है, सिटी लाइफ भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि बहुत कुछ आपको फैसिलिटीज़ मिलती है। लेकिन कभी उन फैसिलिटीज़ को छोड़ के आप नेचर के साथ आइए, माउंटेन्स में आइए और अपने फैमिली को और अपने बच्चों को ज़रूर आप ट्रैकिंग कराइए, क्योंकि जो आने वाली जो जनरेशन है, आने वाला जो समय है, ये ट्रूली मैं आपको बताऊँ 2 चीज़ों में अगर आप अपने बच्चों को भेजोगे, स्पोर्ट्स एंड क्लाइंबिंग या माउंटेनिंग। तो ये 2 चीज़ ऐसे हैं जो मेंटली, फिज़िकली आपको बिल्कुल फिट कर सकता है। क्योंकि आने वाला जनरेशन को आप सेल फ़ोन के ज़रिए एक जगह बिठा के नहीं रख सकते। बहुत सारी बीमारियाँ आ जाएगी, बहुत सारे। तो मैं चाहता हूँ कि अगर आप बच्चों को भेजें, छोटा-सा ट्रैक करने ही क्यों ना भेजें, क्योंकि इंडिया एक ऐसी अपॉर्च्युनिटी है जिसके पास नदियाँ हैं, माउंटेन्स है और नेचर है। 3 तो स्टेट्स है, जे-एंड-के, हिमाचल, उत्तराखंड। हाँ, क्योंकि माउंटेन्स जो इतने सारे हैं, हमारे माउंटेन्स है और पासिस है और झरने, नदियाँ हैं फेमस, और बहुत सारे जो ट्रैक पासिस है, तीर्थ स्थल भी है, तो आप जॉइन कर सकते हैं, जो हिमाचल, उत्तराखंड और लद्दाख, लेह लद्दाख हाई एल्टीट्यूड पासिस, वर्ल्ड की सबसे हाईएस्ट जो बेस कैंप से भी ऊपर हमारे जो मोटरेबल रोड्स है, तो उनमें एक्सपीरियंस यूथ को कराना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जितना मर्ज़ी आप यूथ को बाहर निकालोगे, वो उतना ही फिट रहेगा, उतना ही फ्रेश रहेगा, अपने आप को मेंटली स्ट्रॉन्ग बनाएगा, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि आने वाली जो हमारा जो इंडिया है, वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग बने। इस तरह से और कंट्री के जो एथलीट्स है वो भी, वैसे हमारे एथलीट भी स्ट्रॉन्ग बहुत है, लेकिन कुछ जगह जो सिटी एरिया है, सिटी एरिया में थोड़ी सी हमारे यूथ को और स्ट्रॉन्ग होने की ज़रूरत है। यूथ को नशे से दूर होने के लिए बहुत ज़रूरत है। तो मैं उन सबको यही कहूँगा कि प्लीज़ वेलकम टू द हिमालय, विजिटिंग टू, मतलब आप किसी भी डिस्ट्रिक्ट में जाओ तो डेफिनेटली विजिट कल्चर एंड यूनिक ट्रेडिशनल एंड एंजॉय योरसेल्फ। So his simple message to people is, first you just need to get outside. Yeah. It starts with becoming one with nature. It's not any fancy training or anything. Of course, you need to go through the rigorous training to become a mountaineer, etc. But you start small. Get out. India is abundant with rivers, mountains, passes. Start there. Do a short trek. Bring your kids out. Leave your cell phones behind. Do a short trek and build that strength, and do some more and do some more. And I feel he feels that's the best way you can get out and get to train and be the climber like he is. He started somewhere just like anybody else. So it's the little steps that make you successful. You got to show up and start small. That's correct. I love it. Well, listen, I don't know if I'm ever going to climb an 8,000 meter peak. I don't know if I'm ever going to climb Annapurna or Everest, but I got to tell you, if I ever do, I want to do it with you. I love talking with you. You have this infectious smile, and it's so much fun. You have the best energy, and it's just so much fun to just be on this call and chatting with you. I'm so thankful that we had this time together. Krish, is there anything that you wanna ask Amit? अमित, आप जो भी कहें इस इंटरव्यू में, आप दुनिया के लिए कोई मैसेज है आपका, हिंदी में या इंग्लिश में बोलना है तो बोलिएगा। सर मैं एक चीज़ ज़रूर करूँगा, जिस तरह से सर ने कहा कि आप, मैं एक चीज़ वो ज़रूर मैं थोड़ा सा लेकिन लो थोड़ा सा समझ जाता हूँ। सर ने कहा कि आप हमेशा स्माइलिंग और वो रखते हैं माउंटेन में, तो सर मैं ये चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगा कि मैंने लाइफ में एक चीज़ सीखा है माउंटेन में या उसमें रह के, अगर आप डिमोलाइज होते हो ना, तो आप जो भी करो आपको मज़ा नहीं आएगा। तो आपको पता है कि लाइफ एक चीज़ है, वन लाइफ, तो एक ज़िंदगी जब मिलती है तो उसको जियो ऐसे कि आपको लगे कि नहीं यार मैंने अपनी लाइफ जी है। तो मैं जी रहा हूँ और लोगों को भी मैं ये कहता हूँ कि ठीक है, आप अपनी लाइफ में एन्जॉय कर रहे हैं, अच्छी बात है।
लेकिन अपने लाइफ में एक चीज एक पॉइंट जरूर रखें कि अपने जो मेंटली फिजिकली आप अपने आप को किस तरह से बेस्ट आप रख सकते हैं। और वैसे हमारे इंडिया में एक योगा भी बहुत अच्छी चीज है जो ये लोग कर रहे हैं। मुझे बहुत खुशी है जो ये भी हमारे जो पूर्वजों की देन है। और हम देखो पूर्वजों की जो देन है अभी हम फिजिकली हम फिटनेस स्पोर्ट्स में सब पूरे कंट्री हमारे यूज कर रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ कि जैसे आप इंडिया आएंगे पूरे वर्ल्ड कम्युनिटी को मैं चाहूंगा कि प्लीज वेलकम टू द इंडिया। क्योंकि इंडिया एक ऐसा कंट्री है जहाँ पर आपको इमोशनल और बहुत सारे जो हमारे जो संस्कृति धरोहर जैसे हमारे जो तीर्थ स्थल है तो वो सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। तो उन चीज़ों को मिस नहीं कीजिए क्योंकि काफ़ी लोग आते हैं मेरे काफ़ी फ्रेंड्स हैं तो वो लोग अभी ऋषिकेश भी आए थे जैसे योगा के लिए। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि लोग इंडिया इम्पैक्ट कर रहा है क्योंकि इंडिया बहुत खूबसूरत है। मैं आपको शायद ये बयान नहीं कर सकता क्योंकि आप जितने भी जो कंट्री में आप घूमोगे आपको लगेगा लगेगा कि नहीं कि आप कहाँ हैं। जो बोलते हैं ना स्वर्ग इज लाइक गॉड जो देवभूमि। तो अब शायद कई लोग तो समझेंगे कि देवभूमि क्या है और कई लोग अगर नहीं समझे तो वो उनके लिए अपनी बात है। लेकिन मैं ये पूरे वर्ल्ड को मैसेज जरूर कहना चाहूंगा कि प्लीज आप आइए इंडिया में। इंडिया में बहुत कुछ है बहुत सुंदर और अपने आप को फिट रखने के लिए और नेचर से सबसे पहले तो नेचर की और इतना कम्युनिटी जो हमारे सारे धर्मों को जोड़ती है उसमें ऐसा नहीं कि आप क्रिश्चियन हो आप मुस्लिम हो आप हिंदू हो आप सनातन हो सारे लोग मिलजुल के रहते हैं। तो ये बहुत बड़ा मैसेज है कि यहाँ पर कोई भेदभाव नहीं है। और मुझे लगता है कि लोगों को यहाँ पर आके बहुत खुशी मिलेगी। और मैं चाहता हूँ कि प्लीज वेलकम आप आइए जरूर आइए। So he starts out by reacting to your comment about his smile. So his point is, you only have one life, and you will have setbacks, you will have obstacles, but the best way you can overcome them is with a smile. Nice. You always have to have a positive attitude, and that's the best way you can move forward. His message to the world is India is such a melting pot of cultures. It has given yoga to the world that has been passed down from ancestors. The country in its vastness with the Himalayas and everything is just so beautiful. And he encourages each and every one of you and us to visit the country, embrace nature, and just indulge and in everything that India has to offer. That's his big message. Way to bring it home, you guys. I love it. Thank you guys so much. It has been an absolute joy. Krishna, thank you for being here to help facilitate the conversation. Amit, thank you so much for spending time with us today. And for those listening, I hope you've been inspired today as much as I have. I hope Amit's story has encouraged you to listen to the voice inside that calls you to adventure, because we want to hear your story next. If you have a story to tell or just need a nudge to create one, please send me an email. We'd also appreciate it if you'd help us spread the word by leaving a review and sharing or tagging Inspire Campfire in your social media. And until next time, I want to encourage you to get outside. Thanks for listening. Amit, Krishna, thank you so much for being here.